From maps, we can know a lot about the places we have never visited. A map of a city of country can tell you about its hills, lakes, surveys, roads, railways, climate, agriculture, but all this cannot be put in, onto a single map to show different types of informations. There are different types of maps. For example, are physical map. Map shows towns, cities and borders, different countries. आप ये जानते हैं कि नक्शा हमें दिखाता है कि ज़मीन को अगर ऊपर से देखा जाए तो कैसी नज़र आती है। नक्शों से हम उन जगहों के बारे में जान सकते हैं जहां हम कभी नहीं गए। एक शहर या मुल्क का नक्शा हमें इसके पहाड़ों, झीलों, दरियाओं, सड़कों, रेलवे, मौसम, ज़राअत वगैरह के बारे में बताता है। लेकिन ये सब एक ही नक्शे में नहीं डाला जा सकता। मुख्तलिफ किस्म की मालूमात दिखाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के नक्शे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक तिब्बी नक्शा टेढ़े पहाड़, अज्ञात और दूसरी ज़मीनें खूबसूरत दिखता है। When you look at a map, the first thing to do it is understand the letter of the map and its key. The letter tells about the types of the map and the key tells about the meanings of various colors and symbols on the map. Symbols and colors on a map are used to show different features such as roads, rivers, farms, fields, and जब आप नक्शे को देखें तो सबसे पहले उसका अनुमान और इसकी निशानियाँ समझने की कोशिश करें। अनुमान नक्शे की किस्म के बारे में बताता है और निशानियाँ मुख्तलिफ रंगों और अलामतों को मतलब बताती हैं। अलामतें और रंग नक्शे के मुख्तलिफ खसूसियात देखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें कि सड़क के दरिया इलाके मैदान वगैरह। The other important things to understand a map are scale and direction. Every map has a scale which is used to measure the distance between one place to another. A scale is usually shown in plants and maps has ICM corresponding certain numbers of kilometers of the actual place of physical feature of land. The scale of a map can be expressed in many ways. A line scale, commonly used in map, it is usually drawn beneath the map. Maps also have on arrow showing the direction north. It helps for to find out the directions of places on map. If you draw a map, you must always remember these four things. What kind of landscape do you see near your home? It can be a plain hill or a beach. At the land is shaped in many different forms. We have different names for these shapes and forms, such as mountains, deserts, hills, plains, places, oases, land coast, lines. The shapes of the land is changing all the time. Most major changes happens very slowly. Over millions of years, people can also make change when they build new things like houses and other buildings, road and
bridge, dam, and tunnels, and so on. Mountains are made of very hard rocks. They usually have a pointed shapes and have very steep sides. Some mountains are so high that the tops are above the clouds and covered with snow all year. The highest part of a are made of very hard rocks. They usually have a pointed shapes and have very steep sides. Some mountains are so high rocks. They usually have a pointed shape and have very steep sides. Some mountains are so high that the tops are above the clouds are covered with snow all years. The highest part of a mountain is called the peak. The ground near the peak of the mountains is mostly rocky and where this is why plants find it difficult to grow in this area. Smaller mountains are called hills. Hills are mountains of earth and rocks. They can be large, sloping sides or just small bumps in the ground. Hills are not as high as mountains. Plants usually grow easily on the highest sides, and some are covered when for the gentle slope of hills make good grazing land for sheep and cows. पहाड़ बहुत ज़्यादा सख्त पत्थरों से बने होते हैं। आमतौर पर ये नुकीली शक्ल में और गहरी ढलान वाले होते हैं। कुछ पहाड़ इतने बुलंद होते हैं कि उनकी चोटियां बादलों से भी ऊपर होती हैं और ये पूरा साल बर्फ से ढके रहते हैं। पहाड़ के सबसे ऊंचे हिस्से को चोटी कहते हैं। पहाड़ की चोटी के करीब की जमीन ज्यादातर पथरीली और बंजर होती है। यही वजह है कि इसकी जगह पौधों को उगने में मुश्किल होती है। छोटे पहाड़ों को टीले कहते हैं। ढले जमीन और पत्थरों के ढेरे होते हैं। ये बड़ी ढलान वाले या जमीन पर छोड़ने के ढेर होते हैं। ये बड़ी ढलान वाले या जमीन पर छोटे गढ़ की तरह होते हैं। ठेले पहाड़ों की तरह ऊंचे नहीं होते। पौधे अमूमन ठेलों के अतराफ में ज्यादा आसानी से उग जाते हैं और कुछ जंगलात से ढके हुए होते हैं। टीलों की नरम ढलान पर भेड़ और गाय के चरके के लिए अच्छी घास उगती है। मैदानी इलाकों में जमीन के बहुत बड़े हमवार हिस्से होते हैं। इस तरह की जमीन अमूमन काश्तकारी के लिए बहुत अच्छी समझती है जाती है और लोग आसानी से ऐसे इलाकों में रिहाइश अख्तियार कर लेते हैं। आप ज़्यादातर कस्बों और शहरों को मैदानी इलाकों ही में पाएंगे। रेगिस्तान ज़्यादातर रेतीले और खुश्क होते हैं जहाँ बारिश बहुत कम होती है और पौधे भी बहुत कम उगते हैं। ये दिन में बहुत कम और रात में बहुत ठंडे होते हैं। रेगिस्तान में बारिश के लिए मिट्टी साझेदार नहीं होती। आमतौर पर रेगिस्तान इंसानों के लिए रहने के लायक नहीं होते, इसीलिए ये बहुत ही कम आबाद होते हैं। Plants are very large areas of flat land. This type of land is usually considered to be good for cultivations and people easily residents in each areas. Most of the towns and you will find most of the towns and cities situated on the plants. The deserts are mostly sandy and dry lands where very little rain falls and very few plants can grow. They can be very hot during the day and very cold at night. There is very little soil in the
desert and it hardly ever rains. Deserts are usually uninhabited or separately inhabited by man. मैदानी इलाके जमीन के बहुत बड़े हमारे से होते हैं। इस तरह की जमीन अमूमन काश्तकारी के लिए बहुत अच्छी समझी जाती है और लोग आसानी से ऐसे ऐसे इलाकों में रह कर लेते हैं। आप ज्यादातर कस्बों शहरों को मैदानी इलाकों में ही पाएंगे। रेगिस्तान ज्यादातर रसीले और खुश्क होते हैं, जहाँ बारिश बहुत कम होती है और पौधे भी बहुत कम उगते हैं। जहाँ बारिश बहुत कम होती है और पौधे भी बहुत ही कम उगते हैं। ये दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडे होते हैं। रेगिस्तान में बारिश के लिए मिट्टी सजदार नहीं होती। आमतौर पर रेगिस्तान इंसानों के लिए रहने के लायक नहीं होते, इसीलिए ये बहुत ही कम आबाद होते हैं। Only a few kinds of animals and plants can survive in the deserts because there is very little water. Coconuts plants can grow because they have long roots and can go deep down into the ground to find water. सिर्फ चंद किस्म के जानवर और पौधे रेगिस्तान में जिंदा रह सकते हैं क्योंकि वहाँ पानी बहुत कम होता है। कैक्टस का पौधा उग सकता है क्योंकि उसकी जड़ें लंबी होती हैं। वो जमीन की गहराई में जाकर पानी को तलाश कर सकता है। यानी जजीरा जमीन का वो टुकड़ा है जिसकी चारों तरफ पानी होता है और जजीरे दरियाओं, झीलों, समुद्रों और बहरों में पाए जाते हैं। उनकी जिसामत मुख्तलिफ होती है। ये जजीरे चंद स्क्वायर मीटर से लेकर लाखों स्क्वायर किलोमीटर तक हो सकते हैं। गर्म सैर जजीरों पर नॉर्मल बहुत आम है। गर्म सैर व तफरीह में सबसे फायदेमंद खजूर का दरख्त है। इसका तनाए झोंपड़ियों की तामीर के लिए लकड़ी फराहम करता है। पत्ते छातियों को ढकने में हैं और टोकरियां झोंपड़ियां पायदान बनाने में इस्तेमाल होते हैं। The e- the earth is made up of water or land. The area where the sea meets the land is called the coast. The sea is always moving. The tide comes in and out twice a day as the waves. जमीन पानी और खुशकी से बनी हुई है। वो इलाके जहाँ समुंदर जमीन से मिलता है उसे साहिल कहते हैं। समुंदर हमेशा हरकत में रहता है। लहरें दिन में दो दफा अंदर और बाहर आती हैं। जहाँ break on the shore, they wear away the rocks and peoples. The consistent lines can also the sandy. The Hawks Buoy in Karachi is a sun beach. A large area of flat land that is higher than the land around it is called plateaus, and this area is made up of high rocks with well-defined edges for that drops of lower ground in our country. Balochistan and Patwar are valleys or area of land between two lines of fields of mountains. The bottom of a valley may be flat, the sides may be steep hills or more gentle slopes. Some valleys are made by rivers and streams over many years. The following water slowly wears away the rocks and soil, making way for the water to flow along the soil. There is usually very good or growing crops and there is plenty or grass for animals like cows and sheep. लहरें किनारे पर आती हैं
वो पत्थर और कंकरी